हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई ixamBee. सो जैसे आप जानते हो वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL 2021-2022 एग्ज़ाम. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. जैसे कि आप जानते हो एरर स्पॉटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम आप दो और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो अगर, तो एरर स्पॉटिंग ऐसा टॉपिक है जो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है. इसलिए इट्स अ मस्ट इन एनी कंपेटिटिव एग्ज़ाम. ओके, सो यू कैन नॉट neglect or you cannot overlook or underestimate the importance of a topic like error spotting. With this in mind, today let's start off and look at some very very important error spotting questions. Now these are based on core grammatical concepts, very important grammatical concepts. To be very very specific, आज हम करने वाले हैं 7 to 8 questions and they are all based on tenses. ठीक है, तो आइए आपका टेंस कॉन्सेप्ट जो है, टेंस नॉलेज जो है, वो एक बार क्विकली टेस्ट कर लेते हैं. एंड इट्स गोना बी 7 questions in 7 minutes. सो यू कैन मार्क योर सेल्फ. आप अपना स्कोर खुद रख सकते हो, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो ये ओके, जस्ट अ रिमाइंडर बिफोर आई स्टार्ट आउट विद द टेस्ट कि we are running a new year offer on SSC CGL online courses and it's a flat 40% off. So this is the right time to enroll and you just need to use a code NY40 to get this offer. With this in mind, let's start off. This is your first question. Start. So आप एक बार directions पढ़ लीजिए पहले before you start. So read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error is in one part of the sentence. Error है, if you see sentence has been divided into 4 parts, right? A, B, C, D. There is error in one part of the sentence, right? So mark the part with the error as your answer. तो जो भी part में error है उसको आप mark कीजिए. अगर if you feel कि कोई error नहीं है, so go ahead and you can put option E as no error. Okay, here is your first question. Ready? Can we discuss now? Okay, so through most of 2020, as a liquidity surge supported by central banks help stock markets globally to scale new heights, investors celebrated the V-shaped recovery from the COVID-induced sharp sell-off in February and March. तो आप अपना ऑप्शंस एक बार देख लीजिए. थ्रू मोस्ट ऑफ 2020 एज अ लिक्विडिटी सर्च सपोर्टेड बाय, दैट्स योर फर्स्ट पार्ट. ए में अगर कोई मिस्टेक है, या बी में है, या सी में है, या डी में है, या ई में है, राइट? मैंने आपको पहले ही बोला था कि दिस इज मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर टेस्टिंग योर नॉलेज ऑफ टेंसेस. ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं कि टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, parts of speech or prepositions, these are the 4 pillars of grammar. ठीक है, तो if you are taking a competitive exam and you need to revise your grammar, you need to make sure these 4 pillars are strong enough, right? So these questions are basically from tenses. Now if you read the sentence, we are talking about something that happened in the past, right? Something that happened in 2020. Now, if it is happening in the past, the verb should accordingly show the chronology, show the time. Now, look at the verb. Help. Is help in past tense? No. Help is not in past tense. But you see, celebrated is in past tense. Induced also is in past tense. Right? So, we need to ensure that help is also in past tense. Which makes what? Which makes that our option B has the error in that. Okay, let's move on to the next question. Okay, there you go. This is question number 2. Come on.
This is easy. Are we ready? Okay, so online food delivery platform Zomato is in the process of folding up its office catering business, as the pandemic have forced most employees to stay away from work. Okay, now what are we looking at? As I said, most of these questions are from tenses, but some are not. So here we have an issue with the singular या plural verb. अब पढ़ लीजिए पहले कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो इज, सो जोमेटो इज सिंगुलर, इज है करेक्ट, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग अप इट्स ऑफिस केटरिंग बिजनेस एज द पैंडेमिक. Have pandemic plural? No, pandemic is singular. We are talking of a singular phenomena of a recent surge, right? So pandemic has forced, right? So this is where the mistake is hidden, and our answer is option C. Okay? Right? Okay. Let's look at the next question. Number 3. Come on. Okay, right. The central bank statement comes at a time when some commentators have said that it should be more tolerant of inflation in the wake of economic crisis bringing about by the pandemic. Right? So आप देख लीजिए यहाँ पर bringing about is the place where this is incorrect. Bringing about ये है incorrect. So it should be in the wake of economic crisis brought about. It happened in the past, right? Not bringing about. Okay? Right? So again our error is option D. Okay? Next, number 4. Okay, right. So the government's decision, this is a very similar question. जैसे आपने number 2 में वही same issue है. See, the government's decision to privatize a couple of state-run entities have drawn protests from unions, and this was emphasized in the meeting with state governments. Okay, so आप यहाँ पर देख लीजिए. The government's decision to privatize, we are talking about a single decision. So यहाँ पर verb accordingly should be singular. Instead यहाँ पर है plural. So has drawn protest from the union. Instead of have drawn, it should be has drawn. So our error is in option B. Right? Okay, let's look at number 5. Ready? Okay. So one of the oldest, most pernicious and widespread form of abuse of state power in India involve the police and enforcement agencies selectively targeting political and ideological opponents of the ruling dispensation to interrogate, humiliate, harass, arrest, torture and imprison them, ostensibly on grounds unrelated to their ideology or politics, while sparing comparatively placed supporters and friends of rulers of the day. ये थोड़ा सा बड़ा है, आप थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए. ओके, तो one of the oldest
most pernicious and widest form of abuse of power in India. Now one of the के साथ हम one यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ द वर्ब शुड बी सिंगुलर, यहाँ पर इन्वॉल्व है. तो रूल क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस. द टेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. देखिए, ओके, इसलिए यहाँ पर एस होगा. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मोस्ट पर्निशियस एंड वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ अब्यूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिया इन्वॉल्व्स. ये हो जाएगा आपका इन्वॉल्व्स. सो हो गया आपका ये इन्वॉल्व्स. ए में एक मिस्टेक है. ए में अगेन देयर इज अनदर मिस्टेक. वन ऑफ द का मतलब क्या है? वन ऑफ द का मतलब है कि वन ऑफ द मेनी डिफरेंट थिंग्स, है ना, वन ऑफ देम. ओके, तो देम कहाँ है? ये तो फॉर्म ऑफ अब्यूजेस हो गया. तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर्म्स हो जाएगा. सिंगुलर के साथ आप वन ऑफ द नहीं यूज कर सकते. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मोस्ट पर्निशियस एंड वाइड स्प्रेड फॉर्म्स, वन ऑफ देम, वन ऑफ द फॉर्म्स. ठीक है. सो ए में हो गया हमारा दो मिस्टेक. सो ए इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर 6 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 7 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, और यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन. ये आप खुद से सॉल्व कीजिए एंड लीव द आंसर इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन. And I will take a look and you will be able to see your marks and find out how much you got on 7. Okay, I hope you found the session useful, you found the video useful, or this will help you to become more confident in error spotting. Don't worry, we'll be back with many more sessions. Till then, stay tuned. Thanks for watching.